So as I said, first of all, we are doing basics. Basics means not related with any particular topic from entire syllabus. पूरा सिलेबस से रिलेटेड पहले कुछ बातें कर रहे हैं, वो आपको हर दिन काम आएगा. एवरी डे व्हेन वी विल स्टडी इन द क्लास, दैट बिकम्स ब्रेड एंड बटर फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर द एएफएम सब्जेक्ट. तो मैंने इस पे यहां पर एग्जाम्पल प्रीवियस बैच का ही कॉपी पेस्ट कर दिया है. मैं बनाने नहीं जा रहा हूं, बना सकते हैं. बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन. आप बोलेंगे सर मैंने पास्ट में किया था, मेरे को याद नहीं है. टेंशन नहीं, मेरे को हाफ एन आवर दीजिए, यू विल अंडरस्टैंड. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, अपना ऑब्जेक्टिव है 30-40 मिनट्स में कंप्लीट करना. ठीक है. नाउ सपोज you, me or your organization is doing a project. In the project we will be investing now and we will be getting the cash flows in future. So cash flows future में क्या आएगा, that is given. What will be the investment, that I have not given. Cash flows in future what I will be getting are given. You can say this is $200 million, 200 in thousands, whatever. मैंने short simple figure लिखा है कि we will be getting these cash flows for next 7 years. The project will be running for 7 years. और मेरे को इसका present value निकालना है. The question comes why? Why I need to calculate present value? Suppose I have 100 rupees. मेरे पास 100 रुपया है. I can invest 100 rupees in bank FD. I can invest in share market. I can buy gold, silver. I can buy property. I can buy mutual fund. आप बोलेंगे 100 रुपया में कुछ नहीं आएगा. Just an example. Whatever money I have, there are different avenues for investment. और हर जगह रिटर्न अलग अलग है. If I will do bank FD, I will be getting 6% approx, depending upon maturity. How long I will be investing fixed deposit. If I will invest in mutual fund, whether it is a debt fund, whether it is equity fund, whether it is mix of what, in which sector they are investing, उसके ऊपर return depend करता है. If I am investing in gold, silver, gold and silver prices has gone up drastically in recent times. और नो मार्केट में ऐसा बोल रहे हैं लोग कि गोल्ड और सिल्वर का दाम अभी बहुत जोर बढ़ने वाला है, खासकर गोल्ड, कि it will become 1 lakh. It is around 60-62,000, 1 लाख होने वाला है. I am not saying you should buy gold. बट नॉर्मली गोल्ड में पैसा लगाने से भी आपको रिटर्न मिलने वाला है. अगर शेयर मार्केट बम बम है एकदम, शेयर मार्केट तो वी कांट से हाउ द मार्केट इज ग्रोइंग, इट इज ऑल टाइम हाई. इफ आई विल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी, आई विल बी गेटिंग रिटर्न. यानी कि दुनिया में कोई भी आदमी, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग, दे विल गेट रिटर्न. आप बोलेंगे हम यहां पर वो सब कहां बात कर रहे हैं, हम तो प्रोजेक्ट मतलब मैं पैसा शेयर मार्केट ये सब में नहीं लगाना चाहता. मैं अपना ट्यूशन, मैं अपना सराफ एकेडमी का बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं. फॉर दैट आई वॉन्ट टू टीच अदर सब्जेक्ट्स, want to hire faculties, need to take new tuition center, new software, whatever you say. Investment outside the business. Bank FD, mutual fund, share market, gold, silver, property. Investment within the business. आदमी, anybody in the world want to invest. Invest करने से in the future we will be getting income. Income नहीं मिलेगा तो कोई भी आदमी इन्वेस्ट क्यों करेगा? So if we are doing a project and in the project there will be investment, I want return on my investment. I want my investment to be get back. मेरे को पैसा वापस मिलना चाहिए और साथ में रिटर्न भी मिलना चाहिए. If I am doing fixed deposit in bank 100 rupees for 1 year and the interest rate is 6%, after 1 year I will be getting 106. So after 1 year I will be getting 100 principal also. And I will be getting $6 rupees interest income return also. आप कहीं भी पैसे लगाओगे, बिजनेस में, बिजनेस के बाहर, आपको रिटर्न चाहिए. What we say in finance, 100 if I am doing fixed deposit in bank, then 100 is present value. And I am getting at the rate of 6% interest, 106 after 1 year.
So 106 is called future value. In finance language, present value is today's money. Future value is the money after 1 year, 2 year, 3 years, 6 months later. Present value excluding return. $100, 100 rupees excluding return, and $106 including return. Future value. Future value including income, return, whatever you say, and present value excluding that. Obviously, wherever you invest, you want your principal back and you want the desired return. हम लोग finance में इसको कैसे सोचते हैं कि suppose this is a project, the example which is given here. In this project, we are investing 1,000. We are investing today 1,000. And we will be getting this cash flow for 7 years. हम लोग को ये सब मिलने वाला है. ये मिलने वाला कोई गारंटी नहीं है. हमने प्रोजेक्ट किया है. इफ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन सराफ एकेडमी, हाउ मच आई विल गेट, कोई गारंटी थोड़ी ना है. बट द एस्टिमेशन इज डन. लेकिन मेरे को 7 years के अंदर द 1,000 विच आई एम इन्वेस्टिंग आई शुड बी गेटिंग बैक, एंड 1,000 के ऊपर रिटर्न आई शुड बी गेटिंग इन 7 years, बिकॉज द मनी विल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 7 years. तो मेरे को 7 years में मेरा 1,000 भी वापस चाहिए और रिटर्न भी चाहिए. Suppose return I require 10%. I am investing 1,000 here, I want 10%. Somebody will say, why 10%, sir? If I will invest in bank FD, I will get 6%. If I will invest in mutual fund, maybe I will be getting, suppose debt equity mixed 7-8%. Business कर रहे हैं, कुछ तो risk है. If we are taking some extra risk, we should be getting some extra return. हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट 10%. बट एक बार समझिए कि वी रिक्वायर 10% इंक्लूडिंग रिस्क एंड एवरीथिंग. मतलब इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1,000 टुडे इन द प्रोजेक्ट, देन आफ्टर 1 year 1,000 शुड बिकम 1,100, बिकॉज मेरे को तो 100 रिटर्न भी चाहिए ना. 10%. 1,100 में से 200 आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर फर्स्ट ईयर. सो 1,100 में से 200 गॉन. व्हाट इज स्टिल लेफ्ट? 900. Now 900 is again invested in the same project for next year. So 900 should become 990. 900 plus 10%, 990. I am getting 200 in the second year. So balance is still there. 990 minus 200 is 790. That is still invested in the project for third year. So 790 plus 10% will become something. Again I am getting 200. ऐसे करके मेरे को देखना होगा. Whatever cash flow I am getting from the project every year, that I am adjusting from my investment and return. तो जब मेरा पूरा का पूरा पैसा वापिस आ जाएगा रिटर्न के साथ, suppose it is coming in the 5th year. Suppose by the end of 5th year when I am reaching, my entire investment along with 10% is in my pocket. मेरे को मिल गया. और उसके बाद भी प्रोजेक्ट आगे है. Still I am getting extra. So I should be doing the project. Because getting my principal back, getting my return, I should be doing the project. लेकिन finance में we don't do the calculation like this. What I said, not written also, that I write for बच्चास when I am teaching 10 pass out finance, मैंने आपको ऐसे ही समझाया. हम लोग finance में करते क्या है? This 200 includes 1 year 10%. This 200 includes 2 year 10%. This 200 includes 3 year 10%. ये सब जो है, ये सब में 10% रिटर्न मेरा मिला हुआ है. और इसके अंदर मेरा 1,000 भी है. हम इसमें से 10% माइनस करना चाहते. Like I said, 100 today. And if you add 10% on 100, it will become 110 after 1 year. So 100 is present value, 110 is future value. ये 200 क्या है? Future value. They are the future values. They are including my return. I want to deduct my return from this. When 100 will become 110. After 1 year 110. Today it is 100. So after 1 year 200. Today is 200 divided by 110 into 100. हम लोग इसको कैसे करते हैं? हम लोग $1 के बेसिस पे हिसाब करते हैं. $1 today, after 1 year at the rate of 10%, it is 1.1. So 1.1 after 1 year, today it is 1. So 200 after 1 year,
Today it is 200 divided by 1.1 into 1. Basically 200 by 1.1. Then 200 after 2 years. $1 today. After 1 year 1.1. And second year 1.1 plus 10% 1.21. So $1 today. After 2 years it will become 1.21. So 1.21 after 2 years. Today it is 1. So 200 after second year 2 years. 200 by 1.21 into 1. That means what I am doing? I am eliminating the return portion from all these figures. Eliminating means you can say out of first 200 return I am keeping in my pocket. Out of second 200 I am deducting the return and keeping in my pocket. सब में से मैंने अपना रिटर्न अपने पॉकेट में डाल दिया. The return I have kept in my pocket. Now what I need? 1000 back. I want the return and the 1000 back. So अगर ये सारा का present value, that means return you have already deducted, you have taken. सारा का present value is 1000 or greater than 1000, then we will be doing the project. अगर ये सब का present value is 1000 or greater than 1000, we will be doing the project. If it is present value is exactly 1000, then also you will say that sir 1000 लगाए 1000 मिला और जो return मिला वो कहां गया? What return you got? What you want? If the present value is 1000, you are getting your desired return. If the present value is greater than 1000, you are getting more than 1000 more return. If the present value is less than 1000, you are not getting your return. Because अगर return ले लिए तो आपको 1000 वापस मिल ही नहीं रहा है. Whether we do valuation, whether we do anything, we need to do the present value calculation. जब क्वेश्चंस में कहीं पर भी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी फ्यूचर वैल्यू है, डिसीजन लेने के लिए प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा. डिसीजन लेने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. अब ये प्रेजेंट वैल्यू, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बोला. व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? इंक्लूड माने एक्सक्लूडिंग द रिटर्न. रिटर्न अपना पॉकेट में रखना. एंड देन यू आर लेफ्ट विथ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल वापिस आया कि नहीं. बट ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने में झमेला तो बहुत होना है. प्रेजेंट वैल्यू निकालने में झमेला कम से कम होएगा. इन योर एग्जाम सिंस एक्सेल अलाउड, आप एक्सेल में इनको लिखिए. एक्सेल में लिखेंगे तो यहां पर एक एक्सेल भी खोल लेते हैं. द सेम एक्सेल आई विल बी यूजिंग ऑलवेज इन द क्लास. I have given the name. For the class, I am increasing the cell length and breadth so that we can understand better first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, seventh year. ठीक है? Now, what are the cash flows? 200 for 3 years. So 200, 200, 200. Then 500 and 500 plus 10%. So 500, and this one I am doing 500 into 1.1. Because 500 plus 10% means 500 plus 500 into 10%, 500 common, so 500 into 1.1. Then it is whatever the fifth year, sixth year is fifth year plus 10%. So this one becomes 550 into 1.1. Whatever is the fifth year, sixth year figure is 10% more. Then seventh year, sixth year for every year, sixth year for every year. जो sixth year figure है वही 605 डॉट चलते जाएगा.
blah blah blah. It's not that the project is of 7 years. The project is having endless life. मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू लाना है. प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए आई विल से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%. कहां से मिलेगा? इन द एग्जाम का पेपर मैंने खोलकर रखा है. मान लीजिए दिस इज एग्जाम पेपर. मैं नहीं जा रहा हूं, वहां पर रहता है, ठीक है, नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम. बट मैं एक बार प्रेजेंट वैल्यू टेबल देख रहा हूं. प्रेजेंट वैल्यू टेबल, present value table. This is the present value table. Normal distribution and then the present value table. 10% discounting factor 0.909, 0.826, 0.909, 0.826 and so on. ठीक है, and so on. And then what I need to do? PV. The first one will be this and then into this. ये क्या हुआ? $1 after 1 year. $1 after 1 year. The value today is 0.909. So 200 after 1 year. The value today is 200 into 0.909. We will never be doing like this. One way to do like this. Another way आप सीधा सीधी यहां लिखिए ना यार. Another way, PV. PV में आप rate 10%, comma, put all these figures together, copy pasted all the figures, bracket closed. क्या किया मैंने गलती? रेट, अच्छा ठीक है, लेट मेंशन they want to use NPV. In place of PV you need to write NPV. चलेगा. ये सबका प्रेजेंट वैल्यू एक साथ आ गया. इन दी एक्सेल दिस इज अलाउड. इन एग्जाम इन एक्सेल यू कैन डू दिस. यू विल टेक इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट में रेट एंड देन ऑल द कैश फ्लोज यू गेट द प्रेजेंट वैल्यू. वैसे ये गलत है बिकॉज द कैश फ्लो इज नॉट ओनली टिल 7th ईयर. द कैश फ्लो आर आफ्टर 7th ईयर ऑल्सो. इट इज इन द 7th ईयर द प्रोजेक्ट इज नॉट गेटिंग ओवर. 7th ईयर के बाद भी प्रोजेक्ट चालू है. तो वैसे ये कैलकुलेशन सही नहीं है. But I mean to say that we don't need to see any table and all that for discounting factor. ये सब हम लोग को कोई टेबल वगैरह देखने की जरूरत नहीं. We don't need to see any table. कोई टेबल आपको नहीं देखना है. सिंपली आपको प्रोसीड करना है कि भाई based on Excel calculations, how can you calculate present value? What is this? These all figures are around 3,000. But if you deduct from 3,000 the 10% return of every year, then it is coming 1832. But it is greater than 1,000. But this is not the correct present value because in my question I am saying that 6th year for every year. जो figure 7 year होगा वो 7, 8, 9, 10 नंबर होएगा. You need to remember that in present value, there is two formulas. There are two formulas. One is the formula when there is a cash flow which will be there forever.
there is a formula for one cash flow, which is a cash flow which will be there forever. Here we are saying that 605 will be there every year forever. 605 will be there every year forever. 605 will be there every year forever. 605 हम लोग को मिलेगा हर साल जन्म भर. Now I have calculated present value only 7th, 8, 9, 10 वो भी तो है. कैसे निकालेंगे? कितना तक लिखेंगे? You write 100 years, you can't. So we say present value of perpetuity, which is 605 divided by 10%, which will give you 6050. You will say that, suppose I am giving you 6050 now, and you will be giving me 605 first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, eighth year, for whole life. I am giving you 6050 now, and you will be giving me 605 from first year till whole life. You are giving me only 10%. You will say, khali 10%. Please understand, from today till 10 years when you give me 605, then तो you will be giving me my principal only, no return. आज से 10 साल तक जब आप मेरे को 605 हर साल दोगे तो केवल प्रिंसिपल वापस मिलेगा. जब 11th ईयर पहली बार पैसा दोगे, then I am getting some return. किसको मालूम है 11th ईयर बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं? Any cash flow which has a very far value, उसका आज के दिन वैल्यू कुछ नहीं है. 50 years later, some cash flow, उसका आज के दिन वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है. Not in formula. Formula से कोई वैल्यू आएगा, but practically there is no value for that thing. 6050 is 605 every year उसका present value. But this 605, if first year, second year, third year, fourth year, forever. If the 605 is first year, second year, third year, fourth year, forever, तब this 6050 value is at 0. ये 0 में value आया है. When the cash flow, when the annuity means same cash flow forever. When the same cash flow arises continuously again and again, when the same cash flow arises continuously again and again, then in that case, present value calculation deducting the return is cash flow divided by annuity. But this cash flow is arising from first year, the value is at 0. Here this is arising at 7th year. From 7 year we are saying 605, 605, 605, 605. So when I am doing 605 by 10%, I am getting forever. When I am doing this, then I am getting basically what? These figures are same, okay? And then this 605 converted into 6050. Wherever the cash flow is there, present value is at 0. First year present value 182 is at 0. 200 present value will be at 0. Here this cash flow is not at first year. This cash flow is from 7th year onwards. When you are saying 7th year onwards, you are saying indirectly you are standing at 6th year. So 7th year onwards, whatever cash flow will be there, the present value is 6th year. 66550. 66550. 6655. No. 6655, yes. I am saying that if there is a project where the cash flow will be coming for whole life, the project has indefinite life. So when the project has indefinite life, when there is a project having indefinite life, अगर indefinite life होता है project का, then in that case we are saying always, we always say that the
Present value will be calculated based on a formula annuity divided by interest rate. But from where the annuity starts, it is not starting from first year. If it is starting at first year, the value is at 0. It is starting from 7th year, the value is at 6th year. This is called terminal value. When you solve problems, then this is written in the question, terminal value. Terminal value आपको लिखेगा मतलब there is a cash flow in the project which will be going forever. आपको उसका present value अलग से निकालना पड़ेगा. You can calculate in other way round. आप एक और तरीके से कर सकते हैं. Since 605 is arising from not 7th year, 6th year only. आप 6050 यहीं लिख दीजिए. 6055 you can write here. You can delete this. You can delete this. Whether the answer will change, the total present value will change, it will never change. If I will say, suppose equal to NPV, NPV 10%. Now, comma, this one, better that 1 second. I am putting this here. Control C, Control V. So equal to NPV 10%, comma, the present value is how much? The present value is 4936.96. And if I will calculate present value of this, Control C, Control V, and this is coming 6605 है ना, 6605. Now NPV 10%, comma, all these figures 4940, slightly approximation. It's not a wrong. It is just an approximation error because when we are seeing the table value is also not exact. 0.909, 0.826, 0.751. This is just an suppose in the question somebody has written terminal value 6055 in the 5th year. Somebody has written terminal value 6050 in the 6th year. Both are correct. The difference we are getting just because of approximation. Whenever the cash flows are going to grow, the cash flow are going to remain same forever, then we have to apply this present value of perpetuity. Present value of perpetuity is this. Present value of perpetuity is this, which is annuity divided by interest rate. In annuity, that is the same amount by interest rate. Just need to remember, if this is arising from first year, then this is value at 0. But in the question, this is arising from 7th year. So we are getting the value at 6th year. When from 7th year the cash flow are arising, we are getting the value at 6th year. Or we can say that since the 6th year it is arising only. So from 6th year only if I will calculate, then in that case it is 5th year. कोई फर्क नहीं है, 6th year I take separately or don't take. Doesn't matter. The value will remain same. But I am not going to calculate this present value cash flow in the exam based on discount factor, this, that, calculator and all that. Not required. Not allowed. Cannot be done. Should not be done. There is another formula in cash flow. Suppose here I have said that the 6th year cash flow will be whatever is the 5th year, that will 7th year cash flow is whatever is the 6th year, that same cash flow. I am saying
the 7th year cash flow are same as 6th year cash flow. I am saying 7th year is same as 6th year. है ना? If I will say 7th year is same as 6th year. But if I will say that from 7th year onwards, the cash flow will be 2% extra. From 7th year onwards, the cash flow will be 2% extra. From 7th year onwards, the cash flow will be 2% extra. 7th year, whatever is 6th year plus 2%. 8th year, whatever is the 7th year plus 2%. 9th year, whatever is the 8th year plus 2%. 10th year, whatever is the 8th year plus 2%. And so on. Earlier I said cash flow remains same. Here I am saying cash flow will be growing at the rate of 2% per annum forever. Now in that case it is cash flow divided by interest rate. No. Cash flow plus growth divided by interest rate minus growth. You will say how this formula? This is coming through geometric progression. APGP. GP से निकाला गया है sum. I am not going into mathematics उसका proof करने के लिए. When the cash flow is growing, then after the growth, what is going to be the cash flow? Divided by I minus G. So suppose this thing, if I will put here, ठीक है? I will put here. So first of all, 6th year. Already the cash flow is there 605. And what is further cash flow? Whatever will come from 7th year. 605 into 1.02. Because 7th year it will be 2% more. 8th year further 2% more. 9th year further 2% more. Every year it will grow at the rate of 2%. So 7th year cash flow we are writing. 7th year divided by 10% minus 2% divided by 0.08. Bracket closed. Equal to. This is what? This is again terminal value. This is again terminal value. In technical language, this is called terminal value. Whatever cash flow we will be getting from 7th year onwards, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Whatever cash flow we will be getting from 7th year onwards, present value of those cash flow on 6th year. Just one thing you need to understand, there are two shortcut formula. When the cash flow will remain same divided by interest rate, when the cash flow will grow at the constant growth rate divided by interest rate minus growth rate. But the present value will be coming which year cash flow you are taking. Here you are taking 7th year cash flow. So present value we are getting at 6th year. We are getting the cash flow of 7th year. So we are getting the present value at 6th year. Present value at 6th year. Whichever cash flow you will take, the value will be 1 year back. If you are taking the cash flow of first year, if you are taking the cash flow, value will be at 0. You are calculating present value. But this is 7th year cash flow, you are calculating value at 6th year. In questions, whether you do valuation, capital budgeting, NPV, IRR, any future options, any derivative calculation, ये सब जगह है. Present value correct calculations. Normal present value multiplying by the discount rate we know. Why we calculate present value? So that we decide whether the project should be done or not. Otherwise, how we will be able to do the project? But for doing the project, for doing the present value calculation, there are two things we need to keep in mind. One is annuity, which will go on forever, and one is cash flow, which will grow at the constant growth rate forever. Now, if I will say the total becomes this plus this. So we are getting total cash flow, and then it was 200, 200, 200, 500, 550.
and 6th year. So now the present value equals to NPV rate 10%, comma, all these figures. The value is coming 586076. Earlier, since there was no growth, so the present value was 5000 approx. But now the cash flow will be higher because it will be 2% more. So because of that, the total present value is 5876. Whatever cash flow we are going to get in this project during whole life, because it is not 7 year, whole life, the present value after deducting 10% return from them, the present value is coming 5876. And we are investing in the project 1000. So if I will deduct 1000 from this, then I will be getting 4876 positive figure. I am getting my 1000, I am getting my 10% return, and then I am getting additional 4876. So I should be doing the project, because I am going to get my principal back, investment back, I am going to get my 10% back, and at the same time I am going to get 4876 extra. So when I am going to get extra return, I should be doing the project. We don't do the capital budgeting decisions कि हमने 1000 लगाया तो हम 1000 पे 10% जोड़कर we will say 1100, 200 मिल गया principal interest के against में, balance 900 left. वैसे नहीं करते. We do the calculation in practical life, in exams, we calculate present value, compare with the initial investment and decide whether the project should be done or not. Present value calculation is must. And correct present value calculation will give you full marks. Otherwise कहीं ना कहीं marks कटेगा. Normally when we solve problems, ये थोड़ी ना दिया रहेगा आपने को. It's not बच्चा exam. The cash flow you need to calculate by looking at the data, and then you will calculate present value. So there are marks based on cash flow estimation and then the present value calculation also. But हम लोग का present value में कभी गलती नहीं. What we want, we should not be doing any mistake in calculating present value. हम लोग का तो purpose यही है कि we should not be doing any mistake in calculating present value. Suppose I give another example. Year cash flow. First year 500. Second to fifth year 700 each. Then sixth to 10th year 700 plus 2% every year. 11th year 10th year plus 5% per annum forever. Calculate present value at the rate of 12%. Another example. Okay, first year we will be getting in the project 500. Second year to fifth year we will be getting second, third, fourth, fifth, 4 years 700. Then sixth year to 10th year we will be getting 700 plus 2%. Then seventh year, whatever is sixth year plus 2% up till 10th year. Now whatever is the 10th year, 11th year we will be getting 5% extras for whole life. What will be the present value? Calculate everybody and say the answer. Everybody needs to answer, wrong or right, doesn't matter. The way you want to calculate.
दाঁড়াতে বলুন না। हाँ बोलूँ ना, 10-15 मिनट লাগবে। I'm coming. Give me 2 minutes. Washroom, 2 minutes. You all solve.
others, $66,800. क्या यार, अनुराग, चिन्मय, महारानवा, अदर्स, केदारजी, रोहिणी, सुदीप्ता इज ट्रेवलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, आगे बढ़ते हैं. आप लोग देखिए, मैं लिख रहा हूं. फर्स्ट ईयर 500. सो पुट दिस फर्स्ट ईयर 500. मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे हो जाएगा, यहां से लिखते हैं. फर्स्ट ईयर 500. Then it is said second year to fifth year 700. Second year, third year, fourth year, fifth year 700. 4 times. ठीक है. Then comes 700 plus 2% every year for next 5 years, है ना. So it is 6th year. 700 into 1.02. Then 7th year. 7th year is 6th year into 1.02. Then 8th year. 8th year is 7th year into 1.02. Then 9th year. 9th year is 8th year into 1.02. Then 10th year. 10th year is 9th year into 1.02. ये हुआ. This I said up till first year, second, third, fourth, fifth year, then 6, 7, 8, 9, 10. Then 11th year onwards it is said 5% per annum forever. ठीक है. So 11 is the last, which is 10th year into 1.05. ठीक है. अभी यहां पर मेरे को क्या करना होगा. यू विल से दैट सर वाई यू आर नॉट अप्लाइंग द फॉर्मूला 2. दिस इज नॉट फॉर एवर, दिस इज ओनली फॉर 5 years. The 2% growth rate is not from 6th year forever. This is forever. यहां पर फॉर्मूला लगेगा. What? 811.5 divided by 0.12 minus 0.05. मैंने बोला 12%. So this is what? 6762. 6762 is the present value of cash flow which we will be getting from 11th year onwards. ये 6762 मैं यहां लिख देता हूं. 6762. So this total is coming for 10th year is this plus this. This is coming. और इन सबको नीचे पेस्ट कर देता हूं. So that I will be able to calculate present value properly. So equal to NPV 12%, comma, all the figures. So the value is 6035. You said 6035, that's 100% correct. और दूसरे लोगों ने गलत बोला है, समझ लीजिए भाई. First of all, Anurag said 6035. चिन्मय wrong. महारानवा कुछ गलती हो रहा था. केदार जी wrong. And Rohini, you also wrong. The question says that first year 500, next 4 years 700, then 2% extra till 10th year. Then from 11th year onwards it is 5% extra.
सो पहले मैंने 11th ईयर का 5% बढ़ाकर I माइनस जी किया. आई एम गेटिंग एट 10th का फिगर को अलग से जोड़ा. दीज आर द होल कैश फ्लो, द प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%. आपने कर दिया वो परपेचुइटी, मेरे को मालूम है, जानबूझ के दिया था मैं. यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट इज डिवाइडेड बाई आई एनविटी और डिवाइडेड बाई आई माइनस जी व्हेन इट इज परपेचुइटी. अगर 3-4 सालों के लिए हैं तो अगर आप परपेचुइटी करेंगे वो तो 6th ईयर से जन्म भर का प्रेजेंट वैल्यू आ गया. एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस फिगर फॉर जन्म भर, दिस फिगर यू आर गोइंग टू गेट जन्म भर. सो इफ आई मीन टू से दैट देयर आर 2 formulas. One is annuity forever, one is growth forever. Other than that तो Excel use करना है. Whatever the cash flows are there to be calculated properly, apply Excel to calculate present value. आपको कोई टेबल वगैरह में नहीं जाना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए. In the table we can calculate present value with 8%, 9%, 10%, 7%. But in the question you need to calculate present value with 7.5%. You can do like this. एक्सेल में 1 सेकेंड में हो जाएगा. आप इसमें इक्वल टू इफ यू से एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू योर रेट इज 7.5%. निकालिए, कौन मना किया. बट द टेबल यू कैन नॉट यूज फॉर 7.5%. हो गया. द प्रेजेंट वैल्यू इज हायर. ये देख लीजिए सर, जो 11th ईयर का फिगर था वो 5% हमने बढ़ा दिया. बिकॉज दे आर सेइंग फ्रॉम 11th ईयर यू विल हैव 5% पर एनम फॉर एवर एक्स्ट्रा. सो 10th ईयर का जो फिगर आया था वो 10th ईयर का फिगर को मैंने पहले 5% बढ़ा दिया. फिर डिवाइडेड बाई आई माइनस जी. आई इज 12% बिकॉज आई सेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने प्रेजेंट वैल्यू 12% से लाना है, ग्रोथ रेट 5%. तो इसको सॉल्व करके तो यही दे रहा है. गलत है क्या? श्योर. अगर आ रहा है 1 सेकेंड 1111.5 डिवाइडेड बाई 7%. हाँ सही बोल रहे हैं आप. तो मैं क्या गलती कर रहा हूं भाई? इसको ब्रैकेट में डालना होगा क्या? अच्छा ठीक है सर, समझ गए. तो फिर एक और ब्रैकेट देना होगा. यस सर, यू आर करेक्ट सर. वो एक्चुअली बॉड मास वाला ये इससे डिवाइड दे लिया फिर -0.5 किया है. सही सर, आप सही बोल रहे हैं सर. सो 11,593. सो ये फिगर 12,000, दिस इज 7590 अपने आप हो गया. लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये वाला फिगर जो है ये बढ़ रहा क्यों है? When I am अच्छा ठीक है, सॉरी यार, पागल हूं मैं भी. When I am calculating present value at the rate of 12%, it will be lower. When I am calculating present value at the rate of 7.5%, it will be higher. Because मैं इन सब में से 12% माइनस कर रहा हूं, तो वैल्यू इज दिस. लेकिन मैं इन सब में से 7.5% माइनस करूंगा, देन द वैल्यू विल बी ग्रेटर. आप सही बोल रहे हैं सर, मेरा गलती था यहां. सो सही किसका है फिर? 7590 आपका सही है क्या? ओके. क्या भाई आयुष, तुमने भी मेरे जैसे ही गलती सीलिंग मिस्टेक किया क्या? एट यार. You said 7590, Chinmay. Good, sir. And you are pointing out on the mistake also कि why it is coming. यानी कि अगर हम लोग डिवाइड या तो 7% से करेंगे या अगर हम लोग 12 - 5 करेंगे तो नीचे ब्रैकेट देना होगा. अदरवाइज द बॉड मास इज नॉट टेकन प्रॉपरली. इवन दो कर रहे हैं फिर भी गलत हो जा रहा है. सो द टोटल प्रेजेंट वैल्यू, आई विल से ओनली वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू. पैसा लगाते हैं एक बार and we are getting cash inflow many times. So we can't take cash outflow to different places. We need to bring cash inflow at one place by deducting the return which we require. To deduct the return, we need to calculate present value. Present value of cash inflow minus outflow will give you whether the project should be done or not.
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक्सेल एंड देन टू थिंग्स. If there is a cash flow which will be remain same for the whole life forever, then cash flow divided by I. If there is a cash flow which will be growing at the constant growth rate forever, then the expected cash flow divided by I minus G. But remember, this present value you will be getting from where the cash flow starts. If it is 11th year cash flow, you are getting at 10th year. If it is in the previous example 7th year cash flow, you are getting at 6th year. अगर आप परपीचुइटी भी बात करेंगे, सपोज आई विल से दैट 772.9 फ्रॉम 11th ईयर ऑनवर्ड्स, सो 772.9 डिवाइडेड बाय आई 12%, इट विल बी गिविंग यू एट 10th ईयर. फ्रॉम वेयर द कैश फ्लो स्टार्ट्स, द प्रेजेंट वैल्यू कम्स 1 ईयर बैक. वो ध्यान रखना है, अदरवाइज लगता है कि ये दिस 11,593 इज एट जीरो. इट इज नॉट एट जीरो. व्हेन दिस कैश फ्लो इज फ्रॉम 11th ईयर, दिस इज एट 10th ईयर, और वो 10th ईयर से आपको जीरो पे लेकर आना है. And other cash flows which are there, you need to bring present value. Everybody is getting. With Excel we can do very fast calculation. कोई calculator नहीं चाहिए है. We are already working in the organization doing Excel far better than this. But फिर भी एग्जाम के लिए Excel यूज करिए. Calculator नहीं चाहिए. 95% of your calculation can be done with the Excel. Just 5% calculation थोड़ा बहुत calculator मचकाना है. Because you can do faster calculations in the in Excel. ये कोई चैप्टर नहीं है, ये नॉर्मल है, ये सब जगह हर चैप्टर में आते रहेगा. कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर AFM सिलेबस. ये कोई चैप्टर का बात नहीं. नाउ कम्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट, कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी. जब भी कोई आपको बोलेगा 1 GBP इज इक्वल टू $1.2, तो 100 GBP विल बी इक्वल टू 100 इंटू 1.2, $120, और $100 विल बी इक्वल्स टू 100 बाई 1.2 GBP, बिकॉज GBP इज मोर कॉस्टलियर एंड डॉलर इज चीपर. सो अगर आप $1 से GBP निकालोगे, इट विल बी कमिंग मोर. अगर डॉलर से INR निकालोगे, ज्यादा आएगा. INR को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, कम आएगा. बट do we know every country's currency, which one is cheaper, which one is higher? And even though you know, exam में they will not mention GBP, dollar and all that. They will say A dollar, B dollar, C dollar. कोई करेंसी नहीं है. A dollar, B dollar, C dollar. आप करेंगे कैसे? हम लोग को डिवाइड मल्टीप्लाई सही से करना है. कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी शुड नेवर बी रॉन्ग. ऑलवेज शुड बी 100% करेक्ट. सो वी नीड टू बिकम मैकेनिकल. मैकेनिकल मीन्स एक चीज समझ रहे हैं, उसको हर जगह अप्लाई करना है. Whenever any rates are given, whenever the rates are given, you need to find out which is the base currency. Base currency is that currency whose 1 unit value is given. यहां पर मैंने बोला 1 GBP is $1.2. So base currency is GBP. If I will say $1 is GBP 0.8, then the base currency is dollar. Base currency जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, wherever in practical life, which is the base currency, first of all you need to determine. Base currency is that currency जिसका रेट दिया है, which is 1 unit. $1, 1 pound, 1 rupee, 1 whatever. Whatever is given as 1 unit, that is base currency. Here GBP is base currency. So when you convert base currency into another currency, when you convert 100 GBP into dollar, you need to multiply with the rate. When you convert base currency into another currency, we need to multiply with the rate. And when we convert other currency into base currency, we need to divide with the rate. First of all, determine base currency. Then base currency converted into another currency, multiply. Other currency converted into base currency, divide. अब आपको एग्जाम में इतना सुंदर से लिखेगा नहीं. They will not give like this. In practical life also, the rate is given like this. There are 2 rates in the market. One is for buying, one for selling. Buying matlab, if you buy the currency, then what you need to pay. If you sell the currency, then what you will receive. We are buying and selling through bankers, authorized dealers. Banker क्या कर रहे हैं? हमको foreign currency बेच रहे हैं और हम इसे ले रहे हैं. If I am going to a potato wala in the market, the potato wala is selling potato to me at 12 rupees per kg. He must be purchasing at less than 12. I can also purchase if I want to become potato wala. That is not a problem. But uska wo business hai. So this rate which is given in the market is for customer. You think about yourself. Don't think about the bankers.
आपको अगर जीबीपी खरीदना है, you need to pay $1.3. And if you want to sell GBP, you will get $1.2. The buying and selling rate is not same. They are different. Bid rate, ask rate. Bid ask, कोई काम नहीं है. सीधा सीधी सिंपल बात समझिए. You are the customer in every question. And customer को foreign currency खरीदना है at a higher rate, sell करना है at a lower rate. I will buy 1 GBP at $1.3. I will sell 1 GBP at $1.2. This is GBP rate. This is GBP based currency. GBP converted into dollar. Multiply. Dollar converted into GBP. Divide. अभी झमेला क्या है? If suppose you want to buy 100 GBP. You want to buy 100 GBP, you need to buy at a higher rate. Buying rate, higher rate. You need to pay 100 into 1.3, $130. But if you want to sell 100 GBP, base currency you are selling, but by selling you will get lower dollar. 100 into 1.2. But you will be giving $1,000. With $1,000, how much GBP you will buy? With $1,000, how much GBP you will get? Now $1,000 converted into GBP, divide. Other currency converted into base currency. But which rate? With $1,000 you want to buy GBP. What you are doing? You are buying GBP. Buying GBP is this. Don't think about you are giving dollar, selling dollar. Think about the base currency, what you are doing. If you buy base currency, rate is 1.3. If you sell base currency, rate is 1.2. So I am buying base currency, I am buying GBP. $1,000 में कितना GBP मिलेगा? 1,000 by 1.3. Why divided? Because converting dollar into base currency. Why higher rate? Because I am buying base currency, I am buying GBP. केवल base currency क्या है? और उसको buy कर रहे हैं, sell कर रहे हैं, स्टोरी खत्म. You may think that, sir, this is very simple, but you will realize that हर स्टूडेंट इसी में गत्ता खाता है, इसी में प्रॉब्लम होती है. क्वेश्चन कर रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई में रॉन्ग है, बिड आस्क रेट लेने में रॉन्ग है. तो बेसिक्स है ना, बेसिक्स को गलत नहीं कर सकते. और क्वेश्चन जीबीपी डॉलर देगा तो आदमी दिमाग भी लगा लेगा. इफ द क्वेश्चन इज सेइंग ए डॉलर, बी डॉलर, सी डॉलर, हाउ यू अप्लाई योर ब्रेन, हाउ यू कम टू नो दैट विच इज कॉस्टलियर, विच इज चीपर, थोड़ी ना मालूम है. यू नीड टू बिकम मैकेनिकल. द रेट इज गिवन 1 यूनिट फॉर व्हाट? 1 यूनिट जिसका दिया हुआ वो बेस करेंसी है. बेस करेंसी कन्वर्टेड इंटू अनदर करेंसी, मल्टीप्लाई. अदर करेंसी कन्वर्टेड इंटू बेस करेंसी, डिवाइड. वन थिंग. सेकेंड थिंग, बेस करेंसी यू आर बाइंग, हायर रेट. बेस करेंसी यू आर सेलिंग, लोअर रेट. हायर लोअर रेट, सही रेट, एंड डिवाइड मल्टीप्लाई. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटायर एएफएम सिलेबस. गड़बड़ होने से प्रॉब्लम चालू. Here it is given value of A dollar in terms of B dollar. What is the meaning? वो लोग जानबूझ के अलग अलग तरह से लिख कर देता है. Value of A dollar, value of GBP in terms of dollar 1.2, 1.3, ये वही है. Value of A dollar in terms of B dollar, value of 1 A dollar B dollar के टर्म में. Value of 1 A dollar, this is written like A dollar oblique B डॉलर इक्वल्स टू, इसका मतलब यही होता है. आइदर आई एम राइटिंग लाइक दिस और आई एम राइटिंग लाइक दिस, आई एम सेइंग द सेम थिंग. मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें यहां पर ये बोल रहा है 1 B डॉलर इज इक्वल टू दिस मच A डॉलर. दे नीड टू मेंशन. यू कांट एज्यूम. If they want to say that this is not value of 1 A dollar, this is value of 1 B dollar, they need to mention. Even though I am writing A dollar oblique B dollar, but it is value of B dollar. It is not value of A dollar. The question need to mention. मान लीजिए 1000 जगह क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई एक जगह नहीं बोला, गलत है वो. They need to say. I don't remember, कहीं ना कहीं एग्जाम किट या कहीं पर कोई स्टडी टेक्स्ट में कहीं पर ऐसा दिया हुआ है this one, and they have assumed that it is 1 B dollar. That's not allowed. The market assumed that, which is practical sense, it is value of 1 A dollar in terms of B dollar. So if you need to convert A dollar into B dollar, you multiply with these rates. If you need to convert B dollar into A dollar, you need to divide with these rates. Multiply, divide. Multiply, divide. Now 100 A dollar you are selling into 0.7856. 100 A dollar you are buying into 0.7956.
100 B dollar you were selling. That means A dollar you were buying. 0.7956. 100 by 0.7956. Divide, multiply. Lower rate, higher rate. Base currency. Base currency converted into other currency. Multiply. दूसरा तो याद ही रहेगा. Base currency you are buying, higher rate. Base currency you are selling, lower rate. Story finish. For entire syllabus, whether you do capital budgeting foreign project, whether you do derivative future option swaps, whether you do valuation, cash flow, whatever, सब जगह तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन कैश फ्लोज वगैरह आएगा. हर जगह करेंसी कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड इफ वी आर डूइंग रॉन्ग, मार्क्स विल बी डिडक्टेड. और दुखी भी होंगे कि दिस बेसिक कैलकुलेशन आई एम डूइंग रॉन्ग. दिस इज इवन डिफिकल्ट देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जब सम्स करेंगे तब समझ में आएगा. When 4-5 things, 4-5 currencies are given, interest rates and all that, माथा घूम जाता है. Concentration नहीं हो पाता. Not that we don't know, but we lack concentration. For that reason I am saying, APM लिख के प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा इसको प्रैक्टिस करना आएगा. So that you can get confidence कि मैं जो कर रहा हूं 100% करेक्ट है. उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में है सो तो जाना ही है. One is time value of money. And one is conversion of another currency into another currency. One currency to another currency. These are the two basic knowledge which student need to have for starting AFM. Even though this is a part of FM also. FM में भी चलेगा ही. लेकिन FM में मैं शुरू में ये नहीं बोलता because there are graduate students, undergraduate, not is. तो मैं उनको जब चैप्टर आता है तभी. लेकिन AFM में FM तो नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे ना. AFM में we are assuming FM we know. तो इन दैट केस एक बार बेसिक मैंने कवर किया. मेरा पहला क्लास इसी पे जाता है, कवरिंग द बेसिक्स. देन ओनली वी कैन थिंक एनी अदर थिंग्स. गेटिंग माई पॉइंट. यहां पर जो ये यहां तक नोट्स है, इसके बाद जो नोट्स दिया हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको. मैंने तो आपको बेसिक कैलकुलेशन रीडिंग करवाया. और इसके पहले देयर इज अ नोट्स व्हाट इज द जॉब ऑफ फाइनेंस मैनेजर एंड ऑल दैट. आई विल डिस्कस इन 20-30 मिनट्स इन द नेक्स्ट क्लास. फाइनेंस मैनेजर का काम क्या है, ट्रेजरी मैनेजर क्या होता है, हु इज अ फाइनेंस कंट्रोलर, व्हाट दे डू, व्हाट इज देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे विल बी एबल टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस करेक्टली. उनको सही से कैसे लेना है, बिकॉज एनी क्वेश्चन विल बी इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल कंट्रोल ओनली. सो इट्स अ नॉर्मल, यू कैन से ब्रेड एंड बटर अगेन. सो वो थ्योरी मैंने अभी बोला नहीं. मैंने केवल कैलकुलेशन पे ध्यान दिया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फॉरेक्स में वन करेंसी कन्वर्टेड इनटू अदर करेंसी आपको समझ में आ जाए. दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव. मे बी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई विल स्टार्ट अगेन आई विल गिव अ क्वेश्चन लाइक दिस. अगेन आई विल गिव अ क्वेश्चन ऑन कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर. थोड़ा 15-20 मिनट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. अभी आज इतना ही रहने दे रहे. आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट दिन से थोड़ा 15 मिनट पहले चालू करेंगे. We will start at around 7:15, 7:20. Huh? Not 7:30. So that we can finish it off by 10 o'clock. और Wednesday class तो evening there is no tension. 8 to 11, 12 जितना देर जाए. So next class is on Wednesday, 8 o'clock. 8 to 11, 12. There is no tension. Getting? So leaving for today, study hard, be positive. Just with the classes you follow, you will not have any problem to pass the exam. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Tata, bye-bye.